सारी विस्तारा में बना दूंगी टाइम यार डिफर कर रहा है ना टाइम के हिसाब से सबसे लोएस्ट होगा देखो All right. So, Sahaj and Jay, Yes, sir. we are at the moment live on YouTube as well, and so that you guys can come back to YouTube and check in case you want to once again understand what was explained today. So we're going to discuss about active voice and passive voice. First of all, my first question goes to both of you, starting with Jay. Jay, what do you understand by term active voice? Any idea? No, sir. Sahaj, what do you understand by active voice? So active voice, uh, Okay, no problem. Before we talk about what is active voice or what is passive voice, let's talk about what are the two ingredients that we must have in order to make sentence. If you need to make a sentence, there are two components which are must to have. Any idea what are those? Sir, Bahubali and Kattappa? No. so active passive. एक्टिव पैसिव को किनारे करो. कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बनाने के लिए एक दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो चाहिए ही चाहिए, जिनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते. व्हाट आर दोस? Tense. Okay. No. Very important. There are two things. Number one is subject and number second is verb. If you do not have subject and verb, you cannot make a sentence. Understood? In order for you to make a sentence, it's important for you to have subject and a verb. The rest of the things are additional. They are not mandatory to have. For example, the adverb, the adjective, the article, correct, the prepositions. These all are the additional items that you have in your sentence. Even if they do not exist, still you can have a sentence created. But if you do not have a verb or if you do not have a subject, you cannot have a sentence. Yes, there is a possibility when you do not have the verb, the helping verb plays the role of the main verb. Main verb. Okay, understood? For example, if I have just one subject I and one verb which is sleep, yani sona, I can make a sentence I sleep, मैं सोता हूँ. The sentence gets completed. Understood? But without the verb, no sentence can be made. Now, if you do not have the main verb, you may have at least a helping verb playing the role of a verb. For example, he is a guy, he's a boy. Now here, you do not have a main verb, but is, which is oftentimes a helping verb, is now playing a role of a verb. Main verb. Yes. Understood? So first thing, always understand, in order to make a sentence, two things are mandatory. One is the subject, another one is verb. Verb. Any question till here? No, sir. Okay. Whenever we have a sentence that is an active voice, ठीक है, कोई भी sentence अगर active voice में होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो सब्जेक्ट को दी जाती है. Understood? Any sentence which is said to be in active voice, we give the maximum importance to the subject of the sentence. Let's take a few examples here. I'm sharing the screen. Okay. For example, he is, or the he plays carom. He plays carom. वह carom खेलता है. Okay. So what is the subject here in this sentence, Edge? So he. Very good. So he is a subject. Now, why do I say that we give the maximum importance to subject? क्यों? अगर हम यहाँ पर subject change कर दें, he की जगह I कर दें, I carom. अब ये place लेगा या कुछ change होगा इसके अंदर? So we can change. So in it, we can do I play carom. I play carom. That means you could see the verb had to adjust itself
as per the subject we chose. Right? अगर हमारा Yes, sir. सब्जेक्ट चेंज हुआ तो उसके हिसाब से वर्ब को अपने आप को चेंज करना पड़ गया. That means verb is pretty much influenced by the subject. ठीक है, अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हमारा वर्ब भी चेंज हो रहा है. दैट मीन सब्जेक्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है. ठीक है, यही Yes, होता sir. है जब हमारी बात एक्टिव वॉइस के अंदर होती है. अच्छा, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? We understood he is the subject or I is the subject. Plays or play here is the verb. What is carom? Sir, Sir, object. carom object. ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैरम की जगह कैरम एंड क्रिकेट कर दें, यानी सिंगुलर से प्लूरल बना दें, तो क्या हमें प्लेस को प्ले करने की जरूरत पड़ेगी? No, sir. No, नहीं. sir. इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को चेंज करने से भी सब्जेक्ट वर्ब के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं. नहीं दैट होते. मींस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वर्ब के ऊपर, जबकि सब्जेक्ट का है. अंडरस्टूड? सो इन एक्टिव Yes. वॉइस subject has the influence over the verb, but object has no influence over the verb. Verb. Is it understood? On the other Yes, sir. hand, right opposite to it, when we talk about passive voice, इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा cricket is played. कैसे बनाते हैं मैं बाद में बताऊंगा. by him. Cricket, rather sorry, कैरम था ना. कैरम is played by him. अगर ये हमारा सब कैरम तक होता. ठीक है, कैरम इज प्लेड बाय हिम. यहां पर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देते हैं और सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो हमने कैरम को पहले रखा, कैरम इज प्लेड बाय हिम. अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर ही से आई किया था तो चेंज हुआ था वर्ब के अंदर. सहज एंड जय टर्न योर कैमरास ऑन. ठीक है, हम यहां पर भी चेंज करते हैं, हिम की जगह हम भी करते हैं. क्या इससे वर्ब में कोई चेंजेस हुए? कहीं पर भी नहीं हुए. दैट मीन्स सब्जेक्ट अब यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंस इन्फ्लुएंस नहीं रख रहा है. जबकि अगर हम यहां पर कैरम एंड क्रिकेट कर दें तो क्या होगा? ये इस क्या हो जाएगा? आर में चेंज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज वी यूज इज विद द सिंगुलर एंड आर विद द प्लूरल. Plural. Isn't it? So that means object if changes, it has an impact over the verb or the helping verb. Correct? That means here Yes, sir. object has the influence, not the subject. So passive voice के अंदर object पे influence होती है, object के अंदर power होते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के पास पावर्स होते हैं. Subject के पास power. ठीक है, यानी उसको चाय पानी पूछा जाता है, उसकी खातिरदारी होती है किसकी? सब्जेक्ट की. Subject. एक्टिव, हाँ, जब वो आता है उसको पूछते हैं भाई क्या लोगे, चाय कॉफी गर्म हाँ. ठंडा जो भी है. राइट. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की खूब खातिरदारी होती है, सब्जेक्ट को कोई पानी भी नहीं पूछता. ठीक है, बेचारा खुद से अपनी बॉटल लेके आता है और खोल के पानी पी रहा होता है, उसे कोई भी नहीं Yes, sir. पूछता. और ऑब्जेक्ट को क्या होता है? सब कुछ खिलाते हैं, मीठा भी पूछते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, जाते समय लिफाफा देके भेजते हैं. Understood? So Yes, sir. that's one thing which is a difference. In active voice, subject has the influence. In passive voice, object has the influence. Any questions so far? No, sir. No, sir. Now we have certain rules how to change from active voice to passive voice. Okay, let's talk about it. But before that, it's very important for us to know tenses very well in order to change from active voice to passive voice. So first we'll discuss about present indefinite tense. You guys have already studied the tense. I will just tell you how to change a sentence which is in present indefinite tense. How do we change from active voice to passive voice? Okay. Yes, sir. So I'll write a few sentences here. For example, I sing a song. Very simple sentence. Very, very simple sentence. Take care. She Yes, sir. buys vegetables. They buy.
they treat patients. Okay. You make noise. All right. So I've taken these 4 examples here. I sing a song. She buys vegetables. They treat patients. You make noise. Okay. Now let's try to change them into passive voice. But before that, I will tell you a formula. Always remember, in order for you to make a sentence to passive voice, it's important that sentence should have an object. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा. ओके. अब यहां पर क्या है, आई सिंग अ सॉन्ग. तो पहले हम देते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव करने के लिए फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर. डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट यू नीड टू यूज इज, एम और आर plus V3. V3 means third form of the verb. Guys, remember, in passive voice, you will always use third form of the verb. You'll never use first or the second. Okay? You always need to use the third form of the verb. कोई और form use नहीं होगी बिल्कुल भी. इसके बाद क्या करेंगे, by लगाएंगे और फिर हम subject को उसके objective form में लिख देंगे. Example लेते हैं. I sing a song. इसके अंदर सहज आप बताएं, what is the object? Yes, sir. What is the What object? is the object? Sir, you. I sing a song में object क्या है? Oh, sorry, sir. Sir, I I object है? sing. I'm not here to guess. सहज, I sing a song में subject क्या है, verb क्या है, object क्या है? Sir, subject is a. Is a subject. No, sir. Very good. Jay, you tell me. Sir, I sing. So just a minute. Sir, I sing a song में I subject है. Okay. Then what is the verb? Sir, sing Okay. And what's the object? song. Very good. Perfect. So सहज, I is the subject. Subject is a doer. जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट? टर्न योर कैमरा ऑन सहज. द वर्ड दैट परफॉर्म्स द एक्टिविटी इज कॉल्ड सब्जेक्ट. यहाँ पर अ कहाँ सब्जेक्ट हो गया आपका? व्हाट इज अ डूइंग? अ इज जस्ट एन आर्टिकल. ओके, सो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया. एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही होती है, जो भी वर्ड उसको दिखाता है वो हमारा वर्ब होता है. एक्टिविटी क्या है यहाँ पर? गाना गाने की एक्टिविटी है, तो सिंग हमारा वर्ब हो गया. और यहाँ पर बता रहे एक, यानी कि ये आर्टिकल हो गया. और सॉन्ग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. आई सिंग अ सॉन्ग. उसको फॉर्मूला में रखते हैं जय. सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखना है, तो क्या रखूंगा? आई सिंग अ सॉन्ग में आपने बताया कि सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी ये अ सॉन्ग. ठीक है. फिर हमें इज, एम या आर लगाना है. तो सॉन्ग सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है. तो इज लगेगा कि आर लगेगा? इज हो गया. अब हमें देखना है वर्ब कौन सा है. वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. तो वर्ब तो हमारा सिंग है. सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Sang. sang इज द सेकंड फॉर्म. Sir, sung. संग. ठीक है. फिर हमें बाई लगाना है और फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट क्या था? आई. I. आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? Me. वेरी गुड. नहीं हुई. मी होता है. वी कहां से हो गया? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ाया था? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? Me. तो फिर a song is sung by me. Me. This is the passive form, guys. Understood? Let's have more examples. She buys vegetables. Sahaj, tell me what is the subject? Sir, she. Object? Sir, by. By object है? No, sir, vegetables.
और bias क्या है? Yes, sir. What is Sir, bias? object. Bias object है. Oh, sir, subject. सहज, pay Sir, attention. शी क्या है? आपने बोला सब्जेक्ट है, फिर बायस भी सब्जेक्ट बोल रहे हो आप, वेजिटेबल्स भी कुछ भी बोल रहे हो sir, आप. पहले bias is देखो verb. यहाँ पर बेटा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोनी खेल रहे हैं हम, अगर ठीक है. यू नीड टू गो विद द लॉजिक. इट्स नॉट कि हाँ ये नहीं तो ये तो होगा ही, ऐसे नहीं होता. देखो किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है? शी बायस वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स खरीदती है. इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है? Sir, bias. खरीदना. खरीदना की एक्टिविटी है, राइट. सब्जेक्ट एक्टिविटी तो नहीं हो सकती. शी मतलब किसी हम फीमेल की बात करें वो एक्टिविटी नहीं हो सकती. एक्टिविटी क्या है? खरीदना. तो जो एक्टिविटी होती है वो हमारा वर्ब होता है. तो बायस तो हमारा वर्ब हो गया. अब उस एक्टिविटी को परफॉर्म कौन कर रहा है? सब्जियां She. किसी को खरीद रही है या कोई सब्जी खरीद रहा है? शी जो है वो सब्जियों को खरीद रही है, वो खरीदती है, राइट. तो शी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है यहाँ पे. और वेजिटेबल्स क्या हो? जिसपे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, राइट, वो वेजिटेबल्स है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अगर सब्जियां किसी को खरीद रही होती तो सब्जियां क्या हो जाती? सब्जेक्ट हो जाती, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट. तो यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट है. बाइस हमारा वर्ब है और वेजिटेबल्स हमारा ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड सहज? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे. तो क्या पहले क्या लिखूंगा मैं? Sir, vegetable. वेजिटेबल्स. Yes, sir. उसके बाद मैंने लिखा कि इज एम या आर लिखते हैं. तो क्या लगेगा? इज लगेगा, एम या आर? Sir, Vegetables. are. आर क्यों लगेगा आर? Sir, because vegetables are sir, plural. Plural. Yes, because it is plural, so we need to use are, not is. Very good. Vegetables Okay, are. sir. Now third form of the verb, as I've written in the formula. Correct? So vegetables are bought by Very me. good. By me. Subject क्या है यहाँ पर? So by she. She का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? So vegetables are bought by some. Har. So, Hang on. Let Sahaj answer. What is the objective form of she? Sahaj. Some कोई रिविजन नहीं हो रहा, राइट. पर्सनल प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था सहज, आई हैड टॉट यू क्या लिखना होता है. हार्दिक टीजेस. भूल गए? हार्दिक टीजेस और बाकी लास्ट में अपने आप आ जाएगा. तो शी का क्या होगा? हर. yes, sir. ठीक है. सो वेजिटेबल्स आर बॉट बाय. दैट्स हाउ इट हैज टू बी. वेजिटेबल्स आर बॉट बाय हर. नेक्स्ट आते हैं. once again सहज, I'll go with you. They treat patients. Patients क्या है इसके अंदर? So patience is object. ऑब्जेक्ट. और ट्रीट क्या है? So verb. व्हाट इज दे? Subject. ओके, ग्रेट. इसको चेंज करो पैसिव में. Okay, sir. So patients are treated by them. Perfect. Treated by them. Good. You make noise. Jay, what is the object? sir. Make. Make is the object. Very good. And what is verb then? Okay, sir. Sir, noise. Noise is the verb. No, sir, noise. Sir, noise is the object. Then what is the verb? Sir, make. And what is the subject? Sir, you. Okay. How do we change it from active to passive? Sir, noise is. Mm. Noise is
sir, make by you. Make का थर्ड फॉर्म क्या होता है? What is the third form of make? Sahaj, what is the third form? So made. Make नहीं होता बेटा, made होता है. Made Noise is made by. you. Okay. I hope both of you have written the formula, haven't you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll take a few more examples and you need to solve it. They write stories. Performs salsa. Sir, can you lace your screen, please? Sorry. Can you minimize What do you want to minimize? the screen? Which screen? You're presenting the which The one which I'm writing on? Yes, sir. Okay. Tell me. No, sir, not that minimize means I need to. I want to tell that. Sir, make it small. Yes, sir. Okay. Yes, sir. They write stories. Performs salsa. I love cheese. Participate in race. H. So these are 5. I want you guys to convert them into passive voice quickly. So Jay, why don't you answer the first one? They write stories. What should be the passive voice to it? Sir, the stories are Hmm. written by them. Very good. Sahaj, your turn. She Yes, performs sir. salsa. The salsa is performed by them, by her. डर नहीं लगेगा सिर्फ salsa आएगा. Salsa is performed by. Okay, Very sir. good. Jay, I love tea. Sir, tea is loved by me. Very good. They participate in race. Sahaj. Yes, sir. Race. Sorry? Yes, I'm thinking. So, race is a race in race. So Okay, hang on. Let me make your life easier. They contest elections. Chalo, अब बनाओ. okay, sir. Elections. Elections is. Sorry, sir. Elections are contest
contested by them. Very good. Jay, Sahaj plays cricket. Cricket is played by Sahaj. Very good. Good job done by both of you. Now, what you need to do as a homework, think and write about 20 sentences, and they should be in present indefinite tense, and each of them should have an object. Okay? Write them in active voice and Okay, then sir. convert them into passive voice. Okay? In case you face any challenge, ask me tomorrow. I will help you correct it. Okay? I want you guys to practice it more and more. Trust me, with more practice, you'll be very fluent in it. And it is something which is good for your examination point of view. It is good for your written English. It is good for your spoken English. And it will take your English to a different level if you know how to speak in both active as well as passive voice. Understood? There are a lot more to taught. I will teach you tomorrow about how to change from active to passive for sentences which are in present continuous tense and then the present perfect tense and time permits. Okay. So as of now, let's have a wrap here. And I want you guys to practice present definite tense from active to passive. Let's reconnect tomorrow in case you have any questions to ask. If you don't have questions, I will have questions. Okay. Okay, sir. Sir, will you have the competition from November? We'll discuss about it as it's already 27th. Less likely to happen from first, but we certainly have competitions, but maybe in the second or the third week of November. Okay. Okay. Yeah. Bye for now, guys. I'll see you tomorrow. Bye, sir.